Hello everyone, this is Amandeep. Welcome back to my channel. So today I have brought to you a repeat after me video. इसमें मैं इंग्लिश में बोलूँगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी सब इम्प्रूव हो सके और साथ में आप कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स समझ सकें और जान सकें। सो इसमें एक छोटा सा डायलॉग है कि हम जब किसी को मिलते हैं तो एक सिंपल ग्रीटिंग, जैसे हम हिंदी में नमस्ते करते हैं, पंजाबी में सत श्री अकाल करते हैं, सो सिमिलरली जो हम इंग्लिश में एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, इस वीडियो में उसकी एक छोटी सी झलक है। मैं सबसे पहले पूरा कॉन्वर्सेशन आपको पढ़कर सुनाऊंगी। उसके बाद मैं पूरे कॉन्वर्सेशन में हर एक डायलॉग को 3-3 बार रिपीट करूंगी जब आप उसे मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम कॉन्वर्सेशन की बिगनिंग में आएंगे। यहाँ पर मैं एक डायलॉग बोलूंगी और मैं आपको टाइम दूंगी कि आप मेरे बाद उसको रिपीट कर सकें। सो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड योरसेल्फ? आई एम डूइंग गुड एज वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो व्हाट्स न्यू? Well, I'm preparing for my IELTS exam. I am looking forward to appear for this exam in January. Oh, that's really great. How is your preparation going? My preparation is in full swing. That's good. I wish you all the best. I am sure you will pass with flying colors. That's really nice of you. Thank you so much. What are you doing these days? Nothing much, just the usual. Oh, okay. Anyways, it's been nice meeting you. It was good to see you as well. Have a wonderful day ahead. You as well. Goodbye. Alright, so ये था हमारा एक छोटा सा conversation on greeting each other. अब चलिए इसको beginning से पढ़ते हैं और साथ में इनका मतलब समझते हैं। Hello, good morning, how are you? मतलब good morning या good afternoon या good evening जो greetings हम करते हैं। How are you? आप कैसे हैं? तो लड़की बोलती है I am fine, thank you and yourself. I am fine, मैं ठीक हूँ, thank you, धन्यवाद, and yourself, और आप? I am doing good as well, thank you for asking. तो लड़का बोलता है कि मेरे हाल चाल भी ठीक है, पूछने के लिए धन्यवाद। So, what's new? तो आजकल क्या नया चल रहा है? Well, I am preparing for my IELTS exam. मैं अपने IELTS एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। I am looking forward to appear for this exam in January. और मैं इस एग्जाम के लिए जनवरी में अपीयर होऊंगा। यहाँ पे एक वोकैबुलरी वर्ड यूज हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि कोई चीज के होने का इंतजार करना। सो वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि उसका जनवरी में एग्जाम आएगा और वो एग्जाम को देगा, उसमें अपीयर होगा और अच्छे नंबर लेके पास होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम इन जनवरी, यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जनवरी आए और मैं इस एग्जाम में एग्जाम में अपीयर होऊंगा। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाउ इज योर प्रेपरेशन गोइंग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? माई प्रेपरेशन इज इन फुल स्विंग। ये एक बहुत ही बढ़िया इडियम है, इन फुल स्विंग। इसका मतलब होता है पूरे जोरों शोरों से। तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जब आपने बोलना हो कि कोई भी काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। तो उसने बताया कि उसकी प्रेपरेशन पूरे जोरों शोरों से चल रही है। दैट्स गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत बढ़िया बात है, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। यहाँ पे एक इडियम यूज हुआ है विथ फ्लाइंग कलर्स, स्पेशली पास विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। विथ फ्लाइंग कलर्स यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से कोई काम को पूरा कर लेना। सो दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। आई एम श्योर यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। आप बहुत दयालु हैं कि आपने ऐसे शब्द कहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? आप आजकल क्या कर रही हो? नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट द यूजुअल, वही यूजुअल चीजें जो आपकी लाइफ में चलती हैं वही कर रही हूँ। ओह, ओके, चलो बढ़िया है। एनीवेज, इट्स बिन नाइस मीटिंग यू। फिलहाल आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा।
It was good to see you as well. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा. Have a wonderful day ahead. आपका दिन मंगलमय हो. You as well. Goodbye. आप भी. Bye bye. So ये इनका कॉन्वर्सेशन था. अब हम कॉन्वर्सेशन को दोबारा से पढ़ेंगे, जहां पर मैं हर एक डायलॉग को 3 बारी रिपीट करूंगी. आप मेरे साथ साथ फर्स्ट टाइम सुन सकते हैं, सेकेंड टाइम कोशिश कीजिए प्रोनाउंसिएशन पिकअप करने की. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I am fine, thank you. And yourself? I am fine, thank you. And yourself? I am fine, thank you. And yourself? I am doing good as well. Thank you for asking. I am doing good as well. Thank you for asking. I am doing good as well. Thank you for asking. So, what's new? So, what's new? So, what's new? Well, I'm preparing for my IELTS exam. I am looking forward to appear for this exam in January. Well, I'm preparing for my IELTS exam. I'm looking forward to appear for this exam in January. Well, I'm preparing for my IELTS exam. I'm looking forward to appear for this exam in January. Oh, that's really great. How is your preparation going? Oh, that's really great. How is your preparation going? Oh, that's really great. How is your preparation going? My preparation is in full swing. My preparation is in full swing. My preparation is in full swing. That's good. I wish you all the best. I'm sure you will pass with flying colors. That's good. I wish you all the best. I am sure you will pass with flying colors. That's good. I wish you all the best. I'm sure you will pass with flying colors. That's really kind of you. Thank you so much. What are you doing these days? That's really kind of you. Thank you so much. What are you doing these days? That's really kind of you. Thank you so much. What are you doing these days? Nothing much, just the usual. Nothing much, just the usual. Nothing much, just the usual. Oh, okay. Anyways, it's been nice meeting you. Oh, okay. Anyways, it's been nice meeting you. Oh, okay. Anyways, it's been nice meeting you. It was good to see you as well. It was good to see you as well. It was good to see you as well. Have a wonderful day ahead. Have a wonderful day ahead. Have a wonderful day ahead. You as well. Goodbye. You as well. Goodbye. You as well. Goodbye. आई होप आप लोगों ने साथ साथ रिपीट किया होगा और आपको पढ़ने में और बोलने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अब जस्ट टू एंश्योर कि हम प्रोनाउंसिएशंस को ठीक से बोल रहे हैं, मैं हर एक डायलॉग को एक एक बार बोलूंगी और बोलने के बाद थोड़े कुछ सेकंड्स का गैप दूंगी ताकि आप उसको रिपीट कर सकें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I am fine, thank you. And yourself? I'm doing good as well. Thank you for asking. So, what's new? Well, I'm preparing for my IELTS exam. I'm looking forward to appear for this exam in January. Oh, that's really great. How is your preparation going?
My preparation is in full swing. That's good. I wish you all the best. I'm sure you will pass with flying colors. That's really kind of you. Thank you so much. What are you doing these days? Nothing much, just the usual. Oh, okay. Anyways, it's been nice meeting you. It was good to see you as well. Have a wonderful day ahead. You as well. Goodbye. Bravo. Good job. I hope you learnt it. इस कॉन्वर्सेशन को बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि ये यूजुअल कॉन्वर्सेशन है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यू वुड हैव लाइक्ड इट. अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली बताइए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ. You have a great day ahead. Bye bye.